Good morning, everyone. Today we are starting with chapter number 6, logical thinking. As we all know that computer are not as smart as us. So we can think by our own, but computers cannot think by their own. Like if you are moving on a road, you can take a decision yourself. Like if a car is coming in front of you, then how you have to react, how you have to take the movement. You wanted to take your steps forward, or you wanted to come back. So you can think accordingly, but computer cannot, because computer is just a machine which is having a zero IQ level. Zero IQ level means it cannot think anything by itself. हम कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं कर सकता. But we can ask computer to draw a picture of a bird for you. पर आप ये सारी चीजें कंप्यूटर से करवा सकते हो, because computer follows your instructions uh, given by human beings. हम लोग जो भी instructions देते हैं कंप्यूटर को, computer used to follow those instructions, right? They can only solve the problems that you order them based on your instructions. So वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, आपकी स्टेप बाय स्टेप जो आपने सीक्वेंस लिखी है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, वो उसको फॉलो करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. ठीक है, बट कंप्यूटर लॉजिकली खुद सोच नहीं सकता. Now, what is step by step thinking? Step by step thinking means every action or a problem has a particular sequence of steps. ठीक है, कोई भी हम काम करते हैं तो उसको एक सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं. ठीक है. In this process of action, first list the main steps of solving problem, then mention smaller steps below each main step. For example, let's say your school is organizing a picnic for water park. Now, what you have to do in the school at that time, if your school is organizing, so step one will be you have to make announcement about the picnic, right? Step two will be you will ask the students who are interested in going to water park. After that only you will book the tickets for those number of students. Like let's say if there are 40 students in the class and only 30 are willing to go to water park, so you will book only 30 tickets, and then you will take students on a particular day to that water park. ठीक है. So these are step by step instructions which you have to follow. You cannot मतलब do the third step at first. आप सबसे पहले आप ये वाला स्टेप नहीं फॉलो कर सकते कि आप टिकट बुक कर लो सबसे पहले. नहीं. First you have to do the announcement in the school, then you have to collect the names of the students, then only you will book the tickets accordingly, and then you will take the children to the park, right? So you have to follow particular sequence for of steps. ठीक है. Similarly, if you have to make a cap, then one by one you will follow all the steps, then only you can make a cap like this. This is called as step by step thinking. मतलब one by one you are reading all the steps, you are following all the steps, and then you are executing it. ठीक है. And what is logical thinking? Logical thinking means there are some puzzles, or there are some mathematical problems or science problems which have to be in which there is no sequence which has to be followed while thinking. आपको एक puzzle को solve करना है, you can solve it in 100 different ways. If you wanted to solve a mathematical problem, there is no particular sequence. आप उसको कैसे भी solve कर सकते हो. ठीक है. सो जो भी लॉजिक आप लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज लॉजिकल थिंकिंग. when you say something is logical, it is probably means that this thing makes sense for you. For example, let's say let's say that you really like to drink ice cold lemonade on a cold day, and today's temperature is 5 degrees. So it doesn't make any sense. If the temperature is too low, you should not drink a cold lemonade. What can you conclude from this statement? What is a logical outcome? लॉजिकल आउटकम तो हमें यही कहेगा कि ना, वी शुड नॉट टेक दिस ड्रिंक राइट नाउ बिकॉज द टेम्परेचर इज नॉट suitable फॉर द ड्रिंक. ठीक है. तो द लॉजिक विल से डोंट ड्रिंक द लेमनॉइड.
Logical thinking means a step by step approach to solve problem by reasoning. अब आपके पास एक reason भी है कि why this should be done और why this should not be done. ठीक है? So this is called as logical thinking because you have a valid reason for what, when and why and how. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी हैं अब आपके पास. सो इट मीन्स यू आर थिंकिंग लॉजिकली. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स watch a video to understand what is logical thinking. They are doing uh, a gang of criminals or uh, they are stealing something, TVs from the warehouse, and they are putting in their van. Suddenly, they heard a voice of siren of a police car. Now they could not avoid the police car. Police car आ रही है तो they cannot avoid this situation. But they were not arrested. तो what could be मतलब what could be the way out कि आपने काम भी किया और फिर आप पकड़े भी ना जाओ तो what decision they must have taken at that time so that police will not arrest. When the policeman asked them कि what you are doing मतलब at night at this time, what you are doing here, so they said कि what they did is they started instead of keeping the TV from warehouse to van, they started keeping the TV from van to warehouse again. So and make the policemen understand that they are doing a late night delivery at this time. तो वो डिलीवरी हो रही है, इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग दे आर डूइंग अ डिलीवरी. तो पुलिस वाले ने उसको उनको नहीं पकड़ा. So this is what is called as logical thinking. If you will see this picture, then what do you think? Who is more stupid? जो ज्यादा ऊपर है वो ज्यादा स्टूपिड है, क्योंकि ये तो फिर मतलब दिस गर्ल इज स्टिल सिटिंग ऑन द विंडो बट ही इज हैंगिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द वॉल. ठीक है, तो ही इज मोर स्टूपिड बिकॉज द डिस्टेंस इज मोर देन दिस डिस्टेंस. ठीक है. सो ये आपको किससे बताया? ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग बता रही है ये सारी चीजें. अब अगर हम ये वाली सिचुएशन को देखें तो इसमें कौन है ज्यादा स्टूपिड? वो तो एक नॉर्मल से उस पे खड़ा हुआ है. ठीक है, ही कैन जंप ऑल्सो इवन, बट ही कैन नॉट इवन जंप क्योंकि ये तो ट्रेन भी रनिंग है और आगे एक टनल भी आ रही है. टनल इज ऑल्सो अप्रोचिंग. ही कैन नॉट इवन रन और जंप. ठीक है, तो ये कुछ नहीं कर सकता, तो ही इज मोर स्टूपिड. ठीक है, तो दिस इज ये सॉल्यूशन आपको कौन दे रहा है? ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग. योर लॉजिकल थिंकिंग इज फोर्सिंग यू टू हैव दीज सॉल्यूशंस. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल थिंकिंग. जब आपके पास व्हेन व्हाट एंड व्हाई के आंसर्स आते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज लॉजिकल थिंकिंग. राइट. फॉर एग्जाम्पल, there are four girls and they all are having fruits, and now you have to guess the fruit which they have. ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है फ्रूट्स अवेलेबल आर एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड ग्रेप्स. ये फोर फ्रूट्स हैं. सोनिका एंड सान्या हैव टू पील देयर फ्रूट बिफोर ईटिंग. अब हमारे पास टू फ्रूट्स थे, एक एप्पल, बनाना, ऑरेंज और ग्रेप्स. अब दो के पास वो वाले फ्रूट्स हैं
जिनको पील करना पड़ता है, तो या तो बनाना होगा या ऑरेंज होगा। तो यानी कि सोनिका और साइना के पास तो या एप्पल या बना ऑरेंज में से एक फ्रूट होगा। ठीक है। आगे बोल रहे दिव्या डजंट लाइक ग्रेप्स। अब दिव्या को अगर ग्रेप्स नहीं पसंद है, if Divya don't like grapes, then it must be a apple, because the banana and orange is already taken by Sonika and Sanya. And the last one, Sanya has a napkin to wipe the juice. सान्या का बोल रहा है वो कि उसके पास वाइप जूस वाइप करने के लिए मतलब ही शी इज हैविंग अ नैपकिन आल्सो, तो इट मींस सान्या का कंफर्म हो गया कि शी इज हैविंग ऑरेंज। सान्या का कंफर्म हो गया कि शी इज हैविंग ऑरेंज, एंड दिव्या का कंफर्म हो गया कि शी इज हैविंग एप्पल। ठीक है, तो इसका मतलब है सोनिका का कंफर्म हो गया कि शी इज हैविंग बनाना, क्योंकि उसके पास भी पील वाला फ्रूट था। और अब जो बच गया उसके पास ग्रेप्स है। तो चारू बच गई थी तो चारू के पास ग्रेप्स हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ लॉजिकल थिंकिंग, इन विच यू हैव टू थिंक आउट अ वे एंड you have to find out the reasons for every question. ठीक है, this is called as logical thinking. And this is a reason given. This is the same reason which I have given to you. And this is the end of the chapter. In this chapter, we have learned about what is logical thinking and what is step by step thinking.